हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ प्रीति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिन का ब्रेक हो गया था, व्लॉगिंग एकदम छूट ही गया था। तो आज मैंने रीस्टार्ट किया है इसे और इसको मैं रुकने नहीं दूंगी। मैं रेगुलर व्लॉग्स डालने वाली हूँ। नो वेट वेट वन। तो गाइस, तबीयत एकदम ख़राब हो रखी है हमारी, जो काम हमको हो रखा है। आई थिंक इस टाइम बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ठंडी बढ़ गई है। मैं यहाँ हैदराबाद में रहती हूँ, यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है जितनी यूपी, दिल्ली और नॉर्थ साइड में होती है, लेकिन इतनी कम ठंडी में ही मैं एकदम बीमार पड़ गई हूँ एक्चुअली। एक गाइस, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग छोटे होते हैं, हम बीमार होते हैं, मम्मी पापा हमारी कितनी केयर करते हैं कि बेटा ये पी लो, ये खा लो, रेस्ट कर लो, ये सब कर लो। और जब हम बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम लोग रेस्ट कर लें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चों का ध्यान रखना होता है, उनके लिए खाना बनाना होता है, उनका ध्यान रखना होता है। मेरे तो दो बच्चे हैं। एक तो एकदम छोटा है, 8 मंथ का, और एक ये 5 ईयर की मेरी डॉटर है। रियली ब्लेस्ड गाइज। And her daughter, I study in Springboard. I am PP2. तो गाइज, आप लोग जब यूट्यूब चलाते होंगे तो इस फेस वॉश का ऐड तो सबने देखा ही होगा। तो हियर इज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये फेस वॉश मैंने ये जो ट्यूब है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और मैंने एक और मेरे पास मैंने ऑर्डर करके रख लिया है। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नाइसिनामाइड है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सूट किया है। तो अगर आप वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स से परेशान रहते हैं तो यू कैन यूज़ इट, इट इज़ वेरी गुड। कपिवा का आयुर फूड्स थार एलोवेरा जूस। सो गाइस, ये एलोवेरा जूस है कपिवा का। आजकल मैं ये पी रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी अपनी स्किन में और हेयर में काफ़ी मुझे फ़र्क दिख रहा है। तो अगर आप लोग कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करके, मतलब थक चुके हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहा है, तो यू कैन ट्राई दैट। काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका गट भी क्लीन हो जाता है। सो आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, सो आई थॉट लेट मी जस्ट मेक something to drink which is very warm, and I'm going to make myself a cup of green tea, and I'll add some ginger and honey in it, and I'll feel better, I think. Let's add some honey. It would be enough, I think. So baby is asleep, और मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये किचन का ये हाल हो रहा है, तो I'm just going to clean all this and arrange everything. Let's go. छोटा सा ब्लेंडर है जो हम लोगों ने वी-मार्ट से खरीदा है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरा एक छोटा बेबी है ना, तो उसके लिए किसी कुछ भी फूड उसको देते हैं तो उसको प्योरे फॉर्म में देना होता है, और इसको ट्रैवल वीकली चार्ज हो जाता है। फिर ये 20 टाइम्स ये वर्क करता है, 20 राउंड ऑफ इसका मतलब काम करता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ट्रैवल जब हम करते हैं, मैं कुछ भी बेबी को जैसे बाहर है तो बनाना एंड मिल्क का प्योरे बना के दे सकते हैं। इतना क्यूट है ये। ऐसे मैं इसको दिखाती हूँ आप लोग को। मैं इसमें रोज अपने बेबी को बनाना एंड मिल्क का प्यूरी बना के देती हूँ।
So as you can see, guys, I clean all the utensils. I just left this one. I will wash it later, and I'll arrange everything. And I think I'm all set for my dinner also, because when the baby will wake up, I'll not be having so much work. I prepared this chola in the afternoon, and I'll be eating that only for my dinner with rice, or I think I'll make puri, I don't know. And here this is turmeric milk. I'll give it to my daughter, and I'll drink myself also. And it is all arranged. Now let's go guys, for the evening snack. Today in the morning for the breakfast I prepared this idli, and I'm going to eat that. So here is my idli with the peanut chutney, and this is a special chutney which is made of onions and tomatoes and some jaggery and that red chilies, all these good stuff. This is so tasty, guys, and we are going to enjoy it, me and my daughter. She's watching phone. I just gave her phone for the 10 minutes. I think it's done. Kiara, be a good girl and give it back to me. No. Come. Actually, she got hurt in her finger. She was closing that door, and her finger got stuck in that. Yes. Here is one small scratch is there. That's why I gave her phone, so that she'll feel better. And I'll feed her. Come on, baby. Take a bite. No, So she doesn't want to eat it. I just gave her turmeric milk. Will you drink turmeric milk? not always. Not I just love it, these guys. I just love it. I don't love it. When I was in North, I never used to eat idlis and dosas, because in our house my mother did not used to prepare South Indian food. So when I came here, my neighbor, she taught me all these recipes. So now I usually make idli and dosa for the breakfast. And you know, guys, I should tell you this one interesting thing about Hyderabad. In Hyderabad, for breakfast, everyone, if anyone asks you, did you eat your breakfast, they will ask tiffin. I don't know why they call tiffin instead of saying breakfast or nashta. They say tiffin khai. In our side, we use that word when somebody goes to office or school. Then we used to take the tiffin. But for breakfast, they use this word tiffin. I just love it. And dosa. Dosha. I love dosha. In north side. Mom, isko khol do. So that's it for today's video, guys. I'll try to post more regularly, because I am not regular. I think I'll be posting more regularly. So I request you guys to please subscribe and hit that bell icon. And guys, Okay. don't forget I got hurt. And guys, be safe and be happy. And be well. Yes. In whichever state you are, you're successful, you're not successful. Just be happy, guys, because life is precious.